Hello and very good evening to all of you. Am I visible? जी चलो फिर start करते हैं. So I think about the AI and the robotics I have already told yes. Can someone say yes or no? AI I think I have already told you now about the deep learning, machine learning and the robotics classification नहीं हुई. I think यहाँ तक हुआ था, right? Yes, sir. Yes, sir. We are done with machine learning and all those. Yes, sir. Okay. So if are you is there any voice disturbances or is it going fine? Okay. So let's do the classification of robotics. So majorly the classification of robotics is based on the task they perform. जैसे कि बहुत बात करते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट की, डोमेस्टिक रोबोट की और ह्यूमनॉइड रोबोट की. ह्यूमनॉइड की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ रोबोट विच रिजेंबल्स ए ह्यूमन इन अपीयरेंस. जैसे एग्जांपल इसका दे देते हैं. एग्जांपल कैब और सोफिया. अगर नहीं देखा है इन्हें तो एक बार देखना, इंटरनेट पर डालना सोफिया, द वीडियोस ऑफ सोफिया, then you will be able to understand what she says. Industrial robot. An industrial robot is a reprogrammable multi-purpose robot which can move in 2 or 3 dimensions. आप ऐसे समझो रोबोट की इसी तरीके से ज्वाइंट होता है जैसे आपका एल्बो ज्वाइंट है, सॉकेट ज्वाइंट ऑन द शोल्डर एंड द फिंगर सिंपल ज्वाइंट. तो इसी तरीके से आर्म्स मूव करती है शोल्डर. ठीक है, तो यही है सब. सो ये तो हुआ रोबोटिक्स. सो बेसिकली एआई के जो रोबोटिक्स है हम बात कर सकते हैं कि रोबोटिक्स एक्ट्स लाइक ए फिजिकल थिंग, फिजिकल, और एआई इज द माइंड. ये मैं बोल सकता हूँ अगर मैं एआई और रोबोटिक्स की बात करता हूँ. तो मैरिज बिटवीन एआई एंड रोबोटिक्स have led to the development of the smart autonomous robots. AI and robotics can result into the mass unemployment. ठीक है, कोई मेरी बात इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेगा? Do anyone wants to contradict with this statement? AI and robotics can result into the mass unemployment. कोई भी? Anyone? And with the reason. It is an emerging field that can be used for the mass surveillance. Absence of regulatory framework on AI and technology. The technology is in the control of the few big players. Example: Microsoft, Facebook, IBM, Google. ठीक है, यही है सारे लोग. Now, क्या इस बात से सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ भाई एआई और रोबोटिक्स जब आएंगे तो मास एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी? ये सुन रहा हूँ. देखो लो यार, लिखा मत करो. हाँ कृतिका, ऐसे ही तो लोग चाहिए. यस कृतिका, प्लीज ट्राई टू स्पीक. यस गो ऑन. सर मेरे हिसाब से एआई रोबोटिक्स जब अगर आएंगे तो रोबोटिक्स बेसिकली रोबोट्स का मेन पर्पस होगा ह्यूमन काइंड को सर्व करना. तो अगर हम लोग अगर इंडिविजुअल पर्पस के लिए यानी जो हमारे इंडिविजुअल काम होंगे उनके लिए अगर हम रोबोट्स को एम्प्लॉय करें, लाइक खरीदेंगे या फिर उनको एम्प्लॉय करेंगे जो भी है, तो वो हमारा काम तो नहीं डिक्रीज कर रहे हैं ना, हमारा लाइक हेल्प ही हो रही है. बट अगर हाँ फैक्ट्रीज वगैरह में ह्यूमंस को ही रखते हैं और जो हाउस होल्ड पर्पस है उनके लिए सिर्फ रोबोट्स को रखते हैं, तो इट विल बी लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं होएगा. बट अभी तो हम हाउस होल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स की. आपने देखा होगा पहले एक कार बनाने के लिए कितना काम करते थे, बट आज की डेट में क्या है, मशीन असेंबली लाइन बैलेंसिंग है, ये असेंबली में है, यहाँ से रोबोट अपना काम करेंगे
ठीक है, फाइनल पॉइंट पर आकर कुछ ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी कि हाँ भाई ये इस पर स्टिकर लगाना है ना। यस सर बट सर, जो रोबोट्स बन रहे हैं, जो बनेंगे, उसको मैनेज करने के लिए भी तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही तो काम है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Sir, in those robotics as well, there is one program which was just released as a code by, TechNet Form, that there is a separate program which is a self-repairable program which gets ingested in their programming as well. So if there is, any downtime occurs in this robotic machine, so they self-repair automatically. So no आपके human कहने का required. मतलब है कि हाँ मास एम्प्लॉयमेंट होगा, मास Yes, sir. एम्प्लॉयमेंट। यस जानवी। Sir, I disagree, and that is because I think it is, after all, the humans only behind this creativity, and there will be losses. And with the obviously the companies that have outdated technologies, they'll be going through a lot of losses and problems. But with AI and robotics, I think more or less it'll just benefit the humans only, and because they will still have the upper hand with that technology also. ये तो कुछ पॉलिटिक्स वाली बात है। ठीक है, सब होगा तो, बट इतना नहीं। दो वेरी गुड आंसर, बट आई नीड समथिंग कॉन्क्रीट आंसर विद some kind of example. आई थिंक रोबोट्स जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, मीन जो डेंजरस एक्टिविटीज होंगी, मीन जिसमें बहुत डेंजर होगा, तो फिर वो रोबोट्स नहीं कर पाएंगे, सो दे विल लेफ्ट द जॉब्स फॉर द ह्यूमंस, आई गेस। Sir, I have one point. Maybe I may be wrong, but sir, robots को अगर कोई जैसे कि कोई भी एक कंपनी है, वो एक इंडिविजुअल को सैलरी देती है पर मंथ, राइट? पर अगर रोबोट्स, जैसे कोई भी रोबोट होगा, उसको मैन्युफैक्चर करने में काफी सारा कॉस्ट लगेगा, तो कोई भी कंपनी अगर जो बेसिक लेवल की कंपनी होगी, जो कम लेवल की कंपनी होगी, वो रोबोट्स को हायर नहीं खरीद पाएंगी। तो उस सिनेरियो में जो एम्प्लॉयमेंट है, तो उन सेक्टर्स में जो नहीं हायर कर पाएंगे रोबोट्स को, उस सेक्टर में तो ह्यूमंस रहेंगे। और दूसरी बात है, रोबोट्स को बनाने में भी शायद ह्यूमंस की जरूरत पड़े, तो उस सिनेरियो में भी ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में भी रहेगा, तो वहां पे एक तरीके से वेरी बैलेंस रहा। Yes. So even I would like to add on that I feel ki on the contrary, it might even generate more employment. And so, for instance, we can take the example of having a chatbots. Okay, so behind chatbots also we need technicians and people who can handle that. So I think Yes. so that could Yes. contradict the statement. That is actually the point I want to mention. Just go on. Then unemployment, I think the emotional connect with the work and the passion towards the work would be gone. And moreover, I think if robotics comes into play, then it could lead to a monopoly, like in case of the mobile phone companies, like how there's like monopoly in like 2-3 big companies. I think it could lead to monopoly too. Okay, yeah, that is also a good thing to go on with. But let me give you one of the examples. First time universal basic income was, the idea was basically introduced several years ago, but recently that a person, SpaceX, thinking SpaceX, I'm forgetting his name. He's an can you tell? SpaceX. Elon Musk. Yes, Elon Musk. Elon Musk has specifically targeted that universal basic income. He was very vocal about that people must get the universal basic income. Why? Because in the upcoming time, the human activities will be replaced by the robots. So whatever robot, for example, let's say simple thing, will not go into the too much chaos. Let's understand with the basic economics. Whoever and whichever company wants to make any kind of machine, any kind of product, any kind of service, there must be some human which whom they are targeting, or there will be some kind of human which
those services will be consumed. कुछ लोग होने चाहिए जो उन सर्विसेज को या फिर प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे. If all things will be done by the robots, it means, let's say hypothetically, there are no people to employ, only robots are working. But then what robots will produce? If robots will produce, people do not have money to buy, then there will be loss of the business, and the business cannot run on the losses. So it means, yes, not mass employment, some kind of unemployment may take place, not mass unemployment. But let me go across the next dimensions of this. So when during the 1650s, the industrial revolution took place. The first thing came into the picture was the steam engine. So steam engine, when the steam engine came, it was regarded as that this steam engine will produce the mass unemployment. Why? Because earlier to carry 1,000 people, we needed more than 100 bullock cart. To make these 100 bullock cart, we need some kind of people who will make that. But to drive the 100 bullock cart, I need 100 drivers. But now to carry 100,000 people, I need only one driver. So though it has done unemployment to the 99 people here, but it has created jobs in the backhand in some other way. Example, somebody will make these rails, the railway lines. Someone will do this about signaling. Someone will process the signal. Someone will do other things. Someone will make that railway wagons. So the loss of employment here is the creation of employment somewhere else. In the same way, if the artificial intelligence will be implemented, so somewhere or the other there will be the creation of job here or there. Let's understand with some kind of data. That is called as industrial revolution. Or you can synthesize with that. There are some research paper over the internet. You may go and read if you want. But the data across this data goes this way. ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ है. I have made during when I was studying. So it was somewhere in, sorry, ये graph कुछ कैसे था? The graph was like that. So this graph was about the world. Here was around 150s. This was 2000, and this was about 2010. So this data shows this was the world per capita income. World per capita income. पर कैपिटा इनकम. आप देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा डिप था उसमें, उस ग्राफ में. देयर वाज अ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये एआई के ही कंटेक्स्ट में आया था, तो तब मैंने पढ़ा था वो रिसर्च पेपर. तो उस टाइम उसमें एक ग्राफ कुछ ऐसे था कि अगर आप देखेंगे करंट में, तो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये यहाँ से था, कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1650. ठीक है, ये था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वर्ल्ड की. तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ना कि घटा. आफ्टर 2010 इट आल्सो इंक्रीज्ड स्टीपली, मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ी है. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है सोसाइटी में, इट मीन्स दैट द पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग. तो ये है.
समझ आया कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है? someone will saying that there will be huge job loss, कि भाई कोई आदमी नहीं बचेंगे, only machine will work, so you may counter that also. If you want to enrich something, or you want to write an answer over the AI, then I will recommend to read some kind of article over the internet. And 2019 UPSC essay paper और यहाँ the fifth number essay is about the AI. अबाउट द एआई, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने पूछे हैं, ठीक है। तो वो उसमें आपको अगर ये आइडिया नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको उसमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको उसमें कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देने पड़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल ऐसे भी कि जैसे जैसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये भी एक रिसर्च पेपर में था, इट इज नॉट अवेलेबल इन द रूटीन बुक्स, कि इनइक्वालिटी inequality in UK, USA and there in the France has decreased with the time, but if you see in India inequality is increasing. मेरे पास वो डाटा है बट मुझे भी याद नहीं आ रहा वो डाटा, ठीक है, because it back then when I taught in the economics उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके के डाटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप कुछ भी कॉम्प्रिहेंड कर पाए, कुछ भी अच्छे से लिख पाए। चलो ये तो हुई अपने AI की बात, अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्लाउड सीडिंग। समझ आया क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं, the people who are new joining, समझ आ रहा है या फिर ऐसे लग रहा है कि ठीक है चल रहा है? Who are those new people? Nitish, I think Supriya, Mansi, things are going fine, right? अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो you may ask anytime. So let's understand about this cloud seeding. So cloud seeding, it is a process of augmenting the process of precipitation. Please understand this word precipitation. Precipitation does not mean only rain. Precipitation means rain, snow, hail, sleet. ये सारी चीजें precipitation में आती हैं, ठीक है। By manipulating the sizes of condensation of nuclei. I think your geography is already being done for will be going in the process. Shall not go into the details of this condensation. Or should I go? Should I tell? बताओ, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का टॉपिक है, अगर हो तो मैं बताऊं, नहीं तो अगर हो गया हो तो अल्लाह स्किप करें। कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर। The geography is not done yet. ओके, ज्योग्राफी नहीं हुआ तो चलो मैं समझा देता हूँ। समझते हैं, समझने की कोशिश करना। So what happens, this is my earth, sun rays is coming, यहाँ पे कोई sun है, ठीक है, sun rays are coming towards the earth and because of that earth is becoming warm. When earth is becoming warm, so the air which is in the contact of this earth will get warmer. When air will get warmer, it will become lighter. When it will become lighter, the air will rise towards up. When air will rise towards up, then it will get cooled. अब ये मत बोलना कि सर अर्थ जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी तो सन के पास, सन की तरफ जाएगी तो जो है वो तो गर्म होनी चाहिए, कूल क्यों हो रही है? एक कंसेप्ट है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट मैं पढ़ा सकता हूँ, नॉर्मल लैप्स रेट भी, बट अपने लिए वो फिर मुझे काफी डीप में जाना पड़ेगा ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर एंड ऑल में। तो वो अभी के लिए आप ये समझ लो कि कुछ अपने एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा होता है, एक फिनोमिना है नॉर्मल लैप्स रेट। मतलब जैसे जैसे आप अप इन द एटमॉस्फेयर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर भी घटेगा। मींस the temperature will decrease and the pressure will also decrease. So when temperature will decrease, it means the air will get cooler. When air will get cooler, so air will hold some kind of steam into it, some kind of water particle into it. Water particle means
water in the gaseous forms, mainly on the steam. So when air will get cooler, so what will happen? These water particles or the gaseous water particles or the steam will get condensed. Condensed means the change from vapor to liquid, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब है चेंज फ्रॉम चेंज फ्रॉम वेपर टू द लिक्विड. अब क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे गैस के, और वो ऊपर ऊपर जैसे गए, उनके क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ. टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स थे वाटर के, नाउ they are being condensed. When they are being condensed means they are being changed into the water. When these particles are changed into the water, these water particles will come towards each other. मतलब फ्यूजन होगा. बात जो भी आसपास के वाटर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे. And when they coalesce, when these water particles coalesce, then this will become water drop. When this water drop will form, again water drop will have some kind of weight. So weight is acting downward. So until or unless the air is able to hold that droplet, तब तक तो वो droplet air में होगी. When this size of this droplet is becoming bigger and bigger, in that case droplet will drop down toward the earth and it will form the rain. समझ आया? कैसे कुछ नहीं समझ आया? Should I explain it once again और समझ आ गया? कुछ तो बोलो यार, ऐसे मत करो. सर लास्ट वाला एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो प्लीज. एक बार फिर से समझते हैं, दोबारा से समझने की कोशिश करो. देखो बॉस, ये अर्थ है. This is my sun. The sun is sending rays to it. When these sun rays strike to this ground, they warm this ground, means they heat this ground. When ground is get heated, the air which is in the contact with this ground will get heated. When air will get heated, it means it will get warmer. Warmer the air, it will get more lighter. So जैसे जैसे air heat होगी वो हल्की होती जाएगी, it will get lighter and it will goes up. क्योंकि हल्की चीज ऊपर जाएगी, भारी चीज नीचे से आएगी, तो क्या होगा, इसके जो और सराउंडिंग एयर है वो यहाँ आने की कोशिश करेगी. मींस ऊपर के जो भारी एयर है वो नीचे की तरफ सिंक करेगी. So when this air will get warmer, it will get lighter. When the air get lighter, it will move upward. When air will move upward, it will get cooler. Why? Because of normal lapse rate. What is normal lapse rate? Normal lapse rate is nothing but a phenomena in the troposphere. When we move upward from the ground, the temperature is decreasing. That's why you see in Shimla, in Missouri, when where your training will be in the Missouri, the temperature is lesser than the plain areas. The normal lapse rate generally होता है was 1.5 degree centigrade, 1.6 degree centigrade per kilometer. चलो ये भी बता, ठीक है. तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होता चला जाएगा. then एक टेम्परेचर, वो टेम्परेचर आएगा जहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट होगा. कंडेंसेशन मीन द टेम्परेचर, जब आप ऊपर चलते चले जाएंगे एक टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो those water gases or the vapor will get condensed. When the vapor get condensed means they will form droplet. These droplets are suspending in the air. When these droplets are suspending in the air, these droplets start coalesce. Coalesce means बनना, एक जगह जुड़ना start कर देते हैं. When these droplets start coalesce, the size of droplets starts increasing. When size of droplets starts increasing, it means its
its weight is increasing. When its weight is increasing, this droplet will go downward. When this droplet go downward, it means it is known as rain. क्लियर है? आगे समझ सर, थैंक यू। एनीवन जिसे समझ ना आया हो? चिंदुजा, अभिनय, प्रतिमा, तो सबना, अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर अपन ज्योग्राफी में पढ़ना, ठीक है? साइंस सेंटर क्या कहाँ तुमने ज्योग्राफी पढ़ा दी? चलो लेट्स गो। ठीक है, तो हम कहाँ थे? यहाँ थे। So what actually the cloud seeding is? अब समझते हैं। जो क्लाउड सीडिंग का मतलब है कि मैं कुछ ऐसा एयर में कर दूं, और जैसे जैसे ये एयर ऊपर जाएगी मैं कुछ ऊपर की तरफ कुछ ऐसा कर दूं जिससे जो ड्रॉपलेट्स हैं सस्पेंडेड, द सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स, वो स्टार्ट्स कोएलेस करने लगे। अभी क्या है, एयर तो जाएगी ऊपर, बस एयर जाएगी ऊपर, एयर विल होल्ड सम काइंड ऑफ वाटर पार्टिकल्स, चली गई ऊपर, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट बन गई। बट अभी क्या है, वो वाटर ड्रॉपलेट इतनी बड़ी नहीं है ताकि वो नीचे आ सके। The size of the water droplets is not that big so that they can come toward the ground. In that case, they are suspending in the air above. So cloud seeding is nothing but we are injecting some kind of particle in the air above in the troposphere, so that these water droplets which are suspending in the air start coalescing. When it start coalescing means droplet size increase. Droplet size increase means the droplet will come down. Droplet will come down का मतलब है कि रेन होगी। तो ऐसे कौन से substances है? Under this process, substances capable of absorbing the water vapor are known as hygroscopic. Generally, hygroscopic words is used for the water absorbing thing. But whenever a compound is able to absorb that water, it means it is known as hygroscopic. So what are those? Silver iodide, sodium chloride, potassium chloride, dry ice are sprayed in the cloud to act as a and using, आप एयरक्राफ्ट से भी यूज कर सकते हैं, आर्टिलरी गन से भी यूज करते हैं, रॉकेट से भी यूज कर सकते हैं, जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं। अब इस पर ना एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ गया। Okay, that was a different question. मुझे याद है क्लाउड थिनिंग से था, क्लाउड थिनिंग अभी पढ़ना है, वो आप पढ़िए ज्योग्राफी। ठीक है, चलो। एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड सीडिंग एग्रीकल्चर टू ऑगमेंट द रेनफॉल, पावर जनरेशन में भी यूज होता है। कैसे? क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट ऑगमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक ड्यूरिंग द लास्ट 40 years इन तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया। वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए यूज होता है। weather modification, for example fog dispersal, hail suppression, cyclone modification। the project sky water of USA ये यूज करता है for the fog dispersal। air pollution, जैसे अर्बन एरियाज दिल्ली और मुंबई में हम देखते हैं कि mainly during the October we find too much air pollution, तो in that case हम यूज कर सकते हैं क्लाउड सीडिंग कि भाई आर्टिफिशियल रेन कर दें ताकि वो जो पॉल्यूशन है इट विल कम ऑन टू द ग्राउंड एंड द एयर विल गेट क्लीन। सो नाउ नेक्स्ट अपना टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है द सिंगल लेयर ग्राफीन, द नेक्स्ट जनरेशन वंडर मटेरियल दैट रिवोल्यूशनाइज द मटेरियल साइंस। व्हाट इज ग्राफीन? द ग्राफीन इज ए वन एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन द हेक्सागोनल रिंग शेप। ऐसा बनता है
जहां पर एक एटम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 now next like that इसी तरीके से बनेगी यहाँ पे भी सारे एटम। सो दिस टाइप ऑफ द लेयर इज नोन एज, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है ग्राफीन की। सो कार्बन एटम्स इन द ग्राफीन आर लेड आउट फ्लैट मेकिंग इफेक्टिवली 2D क्रिस्टल्स। 2D 4D क्रिस्टल्स है वो अपने के लिए जानना नहीं है, मटेरियल साइंस वाले को ज्यादा पता होता है। I also know, I read the material science during my mechanical engineering, but that is not what UPSC wants. तो उतने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। The way carbon atoms are arranged in the graphene gives it unique combination of the properties. क्या इसकी सबसे अच्छी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होंगी, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मींस इट कैन हाइड्रोफोबिक एक होता है, दो चीजें, एक है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइग्रोस्कोप, हाइग्रोस्कोपिक इसका मतलब है वाटर फिलिंग, वाटर लविंग मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया मतलब डरना। सो वाटर, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोथ थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, ठीक है। लाइट बीइंग द वन एटॉमिक थिक लेयर, इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, मतलब thickness or thinnest material known, million times thinner than the human hair. So these are the unique properties. अभी आपने सर्च करना है क्लास के बाद ग्राफीन यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया, तो वो अपने आप के पास सर्च कर सॉल्व कर लेना। Hydroponics. Hydroponics is a method of growing the plant without soil, in which plants gets their nutrient from the mineral solution. इस तरीके से होता है। जब हम कुछ होता है ना, बास्केट, एक बास्केट होगी, फॉर एग्जांपल यू sometimes you also do planting in your glass, जो ग्लास कप्स होते हैं उसमें भी अपन प्लांट करते हैं, छोटा सा कोई प्लांट रख दिया और वो ग्रो करने लगता है। तो these type of things are known as hydroponics. Hydroponics is much more popular in Japan because Japan do not have the agricultural land, बहुत ही small, बहुत ही छोटा agricultural land है उनके पास, and which is not sufficient for the population. So in that case they use hydroponics culture. तो वो LED इसी हिसाब से सेट करते हैं टेम्परेचर हाइड्रोपोनिक्स में, ताकि प्लांट ग्रो करे। ये है अपनी हाइड्रोपोनिक। इसे सोइललेस कल्चर भी बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स सोइललेस कल्चर, ये भी इसका नाम है। क्या बेनिफिट्स हैं? हायर यील्ड, फास्टर ग्रोथ, वाटर एफिशिएंट है, इट मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्लायोट्रॉनिक्स। इट इज द नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द प्रोग्रामेबल मैटर। इट इज बेसिकली एंटेल्स द मर्जर ऑफ फिजिकल एंड द कंप्यूटेशनल वर्ल्ड। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, merging of physical and the computational world is known as cryogenics. Programmable matters called C atom or C atoms are the building block of cryogenics, which interact with each other and using electrostatic forces from the tangible 3D object. क्या electrostatic forces होते हैं? Will not go into the detail. आप याद करो, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जब देखते हैं ना कि there is a high voltage electricity line होती है, तो it attracts things towards it, तो उसे बोलते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आप ऐसे भी समझ सकते हैं, when two atoms are there, ठीक है, उन एटम के बीच में एक फोर्स रहता है, उन्हें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, बट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी लगता है बिकॉज ऑफ चार्ज ऑफ दीज एटम्स। आप ऐसे समझो, ठीक है। दो जो वायर की लाइन बताया उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डिफरेंट, उसमें दोनों होंगे, ठीक है। बट ये जो चार्ज है, लेट्स से कि दो एटम है, उन पर कुछ चार्ज है और वो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्रायोजेनिक्स में आपको बस इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं।
मेनली प्रीलिम्स के लिए. हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब है कंडक्शन. कंडक्टिविटी derived from the words conduction. कंडक्शन का मतलब है either heat flow or the electricity flow or the electron flow. कितनी जल्दी हो रहा है. फॉर एग्जांपल लेट्स से जनरली कंडक्शन जो वर्ड है वो लिया गया है हीट ट्रांसफर से. हीट ट्रांसफर, ठीक है. हीट ट्रांसफर का मतलब है कि हाउ क्विकली हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. फॉर एग्जांपल लेट्स से वन ब्लॉक इज this block is cold and another block is hot. Let's say this another block is hot. Let's say ये 0 degree centigrade पर है and this is 100 degree centigrade. When these blocks will come together and they have the physical contact, so the heat will get transferred from here to there, from 100 to this 0 degree centigrade. After some point of time, we will find that both blocks has 50 degree temperature. अगर सब कुछ सही है, homogeneous material है और जो conditions है they are not varying, तो हम ideal condition में assume कर सकते हैं that there will be the temperature of both the blocks will be about the 50 degree centigrade. 50 degree इनका, 50 degree इनका. So the transfer of heat from one place to the another place through the physical contact is known as conduction. So in the conduction means something with the physical contact. So here we are talking about this conductivity. Conductivity is the property of a material which provides conduction. So what in the physical contact is doing, the atoms to atoms are contacting, and the heat from the one atom to the another atom is getting transferred. So superconductivity का मतलब है कि ये heat कितनी जल्दी ट्रांसफर. फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशन में इसे लग रहा है 5 आवर्स. लेट्स से नॉर्मल कंडीशन में लग रहा है 5 आवर्स. सुपरकंडक्टिविटी का मतलब है दैट द हीट विल गेट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. अभी और समझते हैं. Superconductivity is a state of material which shows absolute zero electrical resistance, that allows unhindered flow of the electron. अगर आप हीट ट्रांसफर समझ गए हैं तो इसके ही जैसा इक्वल है. हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी. हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोपोगेट? Electricity is propagated through the conduction of electrons. Electrons are conducted from one place to the another place. उसे बोलते हैं electricity conduction. दोबारा समझते हैं. On one hand, I have let's say I have this plastic cup. On the another hand, I have let's say yes, I have this bottle. This bottle is made up of somewhere in the metal. Let's say ये metal की बनी हुई है and this cup is made up of the plastic. अगर मैं इसे हीट करूं और मैं इसे हीट करूं, let's say I am heating it from this side and I am heating this from this side. So where I will feel more मतलब मैं हीट किस चीज में क्विकली ऑब्जर्व करूंगा? मेरा हाथ कब क्विकली हीट ऑब्जर्व करेगा? बोतल पर या फिर इस प्लास्टिक कप पर? लेट्स से लेंथ ऑफ बोथ दीस कप्स और दिस बॉटल इज सेम. किस में ऑब्जर्व करूंगा मैं हीट? माय क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? In which thing I will quickly observe the heat? In this bottle. Why? Because the conduction of electron is much more higher in the metal than in the plastic. So in the plastic, मैं बहुत देर बाद heat observe करूँगा. Why? Because in this there is too much hindrance in the motion of the electrons, and heat is not getting transmitted from one place to another place quickly. सेम चीज है इलेक्ट्रिसिटी का. इफ आई एम पुटिंग
let's say 1 point of the electric charge here, so my hand will quickly observe that there is electricity, I will get current. But here in the plastic case, I will not get current. Why? Because the electrons of the plastic do not allow the electricity to get conducted from one place to another place. So what superconductivity is? Superconductivity is, for example, let's say if I am putting one electrical charge here and I am getting electricity after, let's say, 2 seconds or 1 second. So superconductivity का मतलब है कि अभी भी जब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी कुछ कम होगा, मतलब अभी भी कुछ टाइम लग रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स अभी क्विकली मूव नहीं कर पा रहे। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है कि द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव quickly as possible, or I am removing all the obstacles from the path of the electrons when they are moving from one place to the another place in the charge. इसका ये है मतलब सुपर कंडक्टिविटी का। So in superconductivity there are number of materials which become superconductor at extremely low temperature or at extremely high pressure. Extremely low temperature में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा, अगर आप फॉर एग्जांपल दो इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन दिस 0 डिग्री के टेम्परेचर, लेट्स से 1K और 2K आपने अटेन कर लिया, तो उस केस में क्या होगा कि सब कुछ स्टैंड स्टिल में हो जाएगा। जब सब कुछ स्टैंड स्टिल में हो जाएगा तो इस टाइम इलेक्ट्रॉन भी अपनी स्टेट में बिल्कुल रेस्ट है, वो कहीं मूव नहीं कर रहे। लेट्स से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, बट इसके बीच में कोई एक ऐसी स्टेज होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑप्टिमल कंडीशन में मूव करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल जैसे इस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में इलेक्ट्रॉन्स अपनी क्लासेस से इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे हैं। दे आर कोलाइडिंग, तो इसका मतलब है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं अपन सुपर कंडक्टिविटी अटेन कर पा रहे, बट हम कोई ऐसा टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सट्रीमली मूवेबल होंगे, ऑप्टिमल पाथ अटेन करेंगे और जो है कंडक्शन करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Though I know I have moved too much details of the superconductivity, but still if you are able to understand then it is well and good. Otherwise एक चीज का रट्टा मारो, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है कि बहुत ही जल्दी कंडक्शन करना है। बहुत ही जल्दी कंडक्शन का मतलब क्विकली कंडक्शन करना है इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे होगा? या तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा या फिर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होगा। ठीक है, इतने के लिए इतना अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। Are we clear on that? जल्दी बताओ। Yes sir. ओके, उसके बाद बात करते हैं हाइपरलूप। हाइपरलूप कंसेप्ट दिया है आपके एलन मस्क ने। ठीक है, एलन मस्क ने कंसेप्ट दिया। एलन मस्क ने कहा कि जब आप when we are moving in the rail, or when we are moving in the vehicle, or when we are driving a motorbike, so in that case air will drag. जब आप मूव करते हैं एयर में, तो एयर आप पर एक फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स। उससे क्या होगा, आपकी व्हीकल की स्पीड कम होती है। सो समटाइम्स यू फाइंड when you are moving against the motion of the air, अभी जैसे लेट्स से कि तूफान इधर की तरफ चल रहा है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है इस साइड, एंड योर व्हीकल इज मूविंग दिस साइड। इन दैट केस बाइक का फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। क्यों? बिकॉज वो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बाइक को। तो एलन मस्क ने कहा कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दो कि ये जो एयर है जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, इसे हटा दो ताकि व्हीकल एकदम से मूव करे। मींस इन दैट केस क्या होगा, एनर्जी भी बचेगी, क्योंकि जो ड्रैग फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बाइक पर या फिर व्हीकल पर, वो नहीं लगेगा। दूसरा, टाइम भी सेव होगा। तो इस प्रोसेस को, द रिमूवल ऑफ द एयर around the vehicle is the concept is used in the hyperloop. उन्होंने क्या किया, हाइपरलूप का कंसेप्ट समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था, अच्छा आपको इस प्लेस से जाना है, प्लेस A टू प्लेस B जाना है, तो मैं क्या करूं, एक टनल बना दूं।
वो टनल, उस टनल से क्या करूं मैं, जितनी एयर है वो निकाल दूं। I am extracting all the air from this tunnel. It means I am creating the vacuum. Though it is not a total high vacuum, but still I am creating some kind of partial vacuum here, so that whenever the pod will move or whenever the things will move in this tunnel, they will not observe the air drag. उसके केस में क्या होगा, एयर ड्रैग नहीं लगेगा, उस केस में क्या होगा, इफिशिएंट होगा और स्पीड तेज होगी। तो वही है ये कंसेप्ट। उन्होंने क्या कहा कि मेरे ये व्हीकल होगी, उसका नाम होगा पोड। एक पोड में 2 या 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। ये पोड मूव करेगा, ये पोड मूव करेगा थ्रू सम काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। इट में बी मैग्नेटिक फोर्स आल्सो, एंड इट में बी अनदर टाइप ऑफ फोर्स। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमें कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट ये कि मैं जब इसमें से वैक्यूम बना दूंगा, और जब भी वैक्यूम बना दूंगा तो पोड जो है हायर स्पीड पर ट्रांसमिट होगा। यही है हाउ डज इट वर्क। Hyperloop transportation system propel a pod like vehicle. It involves moving the passenger capsules through the low pressure near vacuum tubes. These vacuum tubes earlier known as vacuum tunnels. Vacuum tunnels, ठीक है। The pod work is similar to the pneumatic tubes that are used to deliver the mails. Firstly, the track. अब ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, बट आप इसे एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्या है स्लाइड। उसके बाद बात करते हैं genetically engineered solution. What is that? This RIPE project is to increase the photosynthesis efficiency. Under the RIPE, scientists have used the genetic engineering to increase the efficiency of the photosynthesis of tobacco plant. Basically ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेज है या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे लड़ना चाहते हैं। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये कोई पेड़ है, देयर इज अ ट्री, दिस ट्री इज प्रोड्यूसिंग लेट्स से 1 टन O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दिस ट्री और द प्लांट विल इनटेक द कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of the sunlight. They will make the food plus oxygen. This oxygen they will exhale into the atmosphere. तो उनकी कुछ एफिशिएंसी होती है, लेट्स से कि जनरली 2% 1 और 2% एफिशिएंसी होती है। मतलब जितनी भी परसेंटेज ऑफ द लाइट दे आर कंज्यूमिंग फ्रॉम द सन, उसका 1 और 2% ही वो यूज कर पाते हैं, अदरवाइज वो सारा लॉस हो जाता है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या है कि मैं कोई ऐसा प्लांट बनाऊं उसमें इस तरीके की जीन्स इंसर्ट करूं प्लांट में, वो ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मैंने लाइट कंज्यूम की है उससे ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करे, प्लस जो भी उसने लाइट एब्जॉर्ब की है उसकी इफिशिएंसी बढ़ाए और मैक्सिमम O2 प्रोड्यूस करे। मैक्सिमम O2 प्रोड्यूस करे मींस ज्यादा से ज्यादा CO2 को O2 में कन्वर्ट करे। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का एक मैकेनिज्म है। समझ आया? बिकॉज स्मॉल टॉपिक है, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस राइप है, आपको याद होना चाहिए, राइप इज अ project which is based on genetic engineering, plus it will increase the efficiency of the photosynthesis of the plant. पहला plant कौन सा use किया, तो tobacco. Are we clear on that? अभी and all. Okay. उसके बाद 2 concepts हैं, virtual reality and augmented reality. Augmented reality को समझते हैं, technology that layers computer generated enhancement atop an existing reality in order to make it more meaningful. Example, let's say, चलो और समझ लेते हैं। Augmented reality developed into the apps used on the mobile devices to blend the digital component into the real world in such a way that they enhance one with another. Example है augmented reality का PUBG खेला, PUBG. I think most of you have played, right? How many of you have played PUBG? हाँ, PUBG है। चलो समझ लेते हैं, जिन्होंने नहीं खेला, let me. ये एक तरीके का गेम है,
In that game, you usually this game is played over an app. वो ऐप क्या है? वो ऑनलाइन ऐप है और उसको जो गेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है. पबजी का मेनली क्या है कि आप यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ देयर कि हाँ भाई मैं कुछ गन से कर रहा हूँ, मतलब यू आर फाइटिंग विद समवन. ये है ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल. ऑगमेंटेड रियलिटी का सिंपल सा आप ऐसे समझो, through these computers, through these gadgeted devices, you are experiencing something something in the some other area. जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया पबजी का. फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ मैं कोई ऐसी ऐप क्रिएट करूं, फॉर एग्जांपल ये लेट्स से दिस ऐप ऑन व्हिच वी आर टॉकिंग, it is a kind of augmented example of augmented reality. You are experiencing me in the real time basis, and you are experiencing that it is a kind of offline class, though it is online, but yes, you are experiencing कि वहाँ पे सामने टीचर है और वो हमें पढ़ा रहा है. ये है augmented reality का एग्जांपल. virtual reality का एग्जांपल है when my image, if my image is getting created in your home and I'm teaching you there virtually, उसे बोलते हैं virtual reality. Means it is kind of computer generated simulation or recreation of real life example. एग्जाम्पल है इसका अभी YouTube पर करना जियो 5G मीट. उसमें जो अंबानी है, अंबानी की जो लड़की है उनकी, उन्होंने कुछ वर्चुअली क्रिएट किया था और वर्चुअली शी टॉक टू हिज ब्रदर ओवर द फोन. ठीक है, तो वो एग्जांपल है वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी का सिंपल मतलब आप ये समझ सकते हैं. This is one movie of Hollywood. मुझे नाम भी याद है. आप कुछ ऐसा समझो वर्चुअल रियलिटी का, जैसे आपके घर में अभी कोई ऐसा सिस्टम लग जाए, फॉर एग्जांपल कैमरे से, और कुछ मैं इस तरीके का कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम क्रिएट करूं कि यू आर ऑब्जर्विंग मी देयर इन द फिजिकल प्रेजेंस. आप मेरी फिजिकल प्रेजेंस वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं. Though it will be digital presence, but you are still able to see me. हाँ, yes, there is a person who is teaching me. But here you are not experiencing me. Here you yourself experiencing in the class. और उसमें आप एक तरीके का रियल टाइम एनवायरनमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं. उसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी. Now, next understanding is about data. So what actually the data is nothing but the digital footprints. उसे बोलते हैं data. For example, when I'm teaching you, I'm creating some kind of data. Data मतलब whatever I wrote digital footprints, it is also a data. Data is nothing but the qualities, character, and the symbols on which operations are performed by a computer, which may be stored, transmitted in the form of electrical signals recorded on the magnetic, optical, and mechanical recording media is known as data. In the simple logic terms, it is nothing but the digital footprints. So what is big data? Big data is usually the news you may find कि भाई क्या है big data. I was listening one of the TDS lecture अगर आपने पढ़े हो सुना हो कभी. TDS lecture एक अमेरिकी के प्रोफेसर का था on the big data. उन्होंने कहा what is big data? In that next slide he wrote, I don't know about the big data. I know only data. The people are saying big data. Big data means big data is about the variety or the volume. Volume means a huge data is a big data. Huge data is a big data. Plus it must have huge type of variety. It comes under the big data. Plus volume हो गया, variety हो गया, velocity. How quickly that data is transmitted from one place to another place. Or if I have stored some kind of data, how quickly I am storing velocity.
veracity, the degree to which big data can be trusted, मतलब trustable, trustworthy है कि नहीं, value, will this data add some kind of value to my business or to my organization or to my nation or to my society, or variability, the ways in which big data can be used or formatted. So in that context, one thing आपने बिग डेटा को इसी में बस इतना ही याद रखना है। बिग डेटा का आप ये समझो कि बहुत बड़ा डाटा है, आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है, और वो ट्रस्टेड डाटा है। हाउ यू कैन यूज दिस डेटा, ये है अपने लिए इंपॉर्टेंट, ये हाउ यू कैन यूज दिस डेटा। फॉर एग्जांपल, यू हैव आधार कार्ड, गवर्नमेंट हैज आधार डेटा ऑफ all over India, means Indian resident, which includes citizen plus non-citizen also. आधार कार्ड में आधार डेटा है, तो आधार डेटा इज ए ट्रस्टेड डेटा। हाँ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हाँ, वेरासिटी है, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, सारे लोग डिफरेंट है तो उनका डिफरेंट डेटा, तो दिस इज नोन एज बिग डेटा। सो बिग डेटा की हमें समझनी है एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा क्या है यार, सब कुछ इंक्लूड करेगा। If you want to prosper your business, हाँ, उसमें यूज हो सकता है। If you want to provide services to the people, means government, हाँ, example आधार कार्ड अभी फूड प्रोसेस, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हाँ है, बैंकिंग, हाँ, टैक्स भरना है, हाँ। Now it is becoming a universal, universal card, universal type of card बनता जा रहा है। Unique identification number है दो, but now it is becoming universal identification number, big data. Whenever you use Ola, some kind of data you are created, Ola company holds that data and Ola company try to process that data and Ola company try to understand भाई इस वाले रीजन में कितने लोग हैं जो ओला से ट्रैवल करते हैं, उस रीजन में कितने लोग हैं जो ओला से ट्रैवल करते हैं, वो कौन सा रूट है जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोग ओला से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डेटा नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑन व्हिच रूट you have to put maximum number of Ola, because you do not know on which route is busy or which route have the light traffic, ठीक है। तो big data can be used for the business process engineering, can be used to enhance the services for the government, can use to enhance the perception of the citizens। तो ये है अपना big data। अगर आज की स्लाइड्स तक यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो you may tell me right now, otherwise we will meet tomorrow, I mean in the next class। मेरी 5:30 से एक और क्लास है, 5:30 is getting completed। Are we on the same page? I hope you understood today's class, otherwise we will meet tomorrow। सुब्रा, हाँ, आपका एक क्वेश्चन था about influenza, so let me clear that। देखो, इन्फ्लुएंजा ए होता है, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी। जनरली इन्फ्लुएंजा ए और बी बिल्कुल सेम होते हैं, बट इन्फ्लुएंजा बी में एक डिफरेंस होता है, दैट इट ट्रांसमिट्स ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन। ये शायद उस स्लाइड में मिसिंग है, तो आप एक बार उसे अपडेट कर लेना बस अपने पास, है ना। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा सी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। इन्फ्लुएंजा बी, it acts like A, but only difference between the A and B is that it only transmit from human to human contact। So thank you very much for today's attention. We will meet in the next class. Till then, stay tuned and wish you very good luck।